और आप देख रहे हैं द क्रिएटिव कन्या। इस चैनल पे हम लोग बनाते हैं वीडियोस रिलेटेड टू DIY एंड आर्ट, जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे केक टॉपर्स। लास्ट 3-4 महीने से हम सब लॉकडाउन में हैं एंड मेरा इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप स्टेटसेस आर फिल्ड विद केक्स विच आर मेड एट होम। दे लुक यमी, दे आर ब्यूटिफुल, बट देयर इज ओनली वन थिंग विच इज मिसिंग, विच इज अ केक टॉपर। यू रियलाइज जब हम बाजार से केक लेके आते थे तो हम वहाँ केक शॉप वाले को बोलते थे टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन। वी यूज टू गेट स्मॉल डेकोरेटिव पीसेस जिस पे लिखा होता था हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ दैट इज मिसिंग बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो हमने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और घर पे बनाते हैं सम केक टॉपर्स with things which are like simple and at home. So let's get started. For this cake topper, you need thick paper, a toothpick, a black pen, a glue, and a thin paper. We will start by writing happy birthday or happy anniversary or anything else that you like. Now I'm decorating my paper with some stars, which is completely optional. Now we will use a toothpick and stick it, and we use the thin paper to make it strong. And just like that, our cake topper is ready. You can make your cake topper in any shape. I have made one in triangle and oval shape as well. Now we will make our banner style cake topper. You will need a paper, thick or thin is your choice. We are using a thin paper for our demo, a string, a popsicle stick or chopstick, and along with that you will need some stationery, scissors and glue. Here I am cutting paper in 2 by 3 centimeter square. Now I'm arranging and gluing my paper to the string. After that, I will trim the edges of the square and make the shape to triangles. Now I'm writing my name and then I will do the background color for my banner. Now I will attach my string to the popsicle sticks. And our banner is ready to be put on the cake. Similarly, I have made this one as a set with a matching paper. And we are all set for our next party. Tell us, how do you like this new DIY? Hope you enjoyed the video. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel.